Congratulations to you on and the entire team on the trailer. mobile first, second. Sajid sir, my question to you is, we have been hearing that for the first time the film might have two different versions releasing with two climaxes. That's what we have been reading. Could you tell us something on this? So I've been thinking about this for the last 30 years that if I make a thriller, what would be the X factor? How would people leave the theater with the villain out? So I've written a story which every theater will have a different killer. So if you see a Gaiety, you will have one killer, and in Galaxy there will be somebody else. In PVR, in screen number 4, you will have one killer, and PVR screen number 5 there will be a different killer. And you may switch the DCP sometimes. So even 6 o'clock show would have a different killer. So every time you watch the film, you will have a different killer. Thank you. And This is first time in the narrated to world. us. So first time in the world this is happening. This was narrated to us after we shot it. Yeah, this is narrated while they were shooting in the last portion. I don't think half the people know who the killer is. So there have been so many content films which are coming with you as well. You were also part of a lot of content films. So how do you view a slapstick film in today's time? I think if I would not be mistaken that slapstick comedy ये कोई ऐसी आसान कॉमेडी नहीं है. नाना साहब ने इतनी कॉमेडीज़ की हैं, रितेश ने इतनी कॉमेडी की है, श्रेयस, अभिषेक, they can vouch for it. They have been part of so many other comedies franchise. But let me tell you, slapstick comedy is very difficult. And this comedy, what we all have done, is slapsticks mixed with action comedy. It is physical comedy. I'm a huge fan of Charlie Chaplin. Huge fan. Trust me, I'm telling you. I even have his photograph in my wallet. And if you want to see it, I can show it to you. But I'm a huge fan of Charlie Chaplin because the way he does comedy without saying a single word, with so much of physicalness. So I think that kind of comedy, I am a huge fan of it. So this film has that kind of thing. And unfortunately, this kind of comedy doesn't get that क्या कहते हैं उसका जो है ना कदर नहीं मिलती उसकी, acclaim नहीं मिलता उसको. It is award तो भूल जा बेटे, award कहाँ से मिल सकता. But it is very very difficult to make people laugh when it comes to physical comedy and when it comes to slapstick comedy. That's it. I would just like to add. फोटोग्राफ देखनी है क्या? I like to add one thing कि आपने जब बोला. There's my wallet. है wallet. Sorry. I just like to add one thing. जब आपने बोला कि content film है और फिर comedies है, ये सोचना बहुत गलत होता है कि comedies में content नहीं होता. तो I would expect. Hello, in the center. Here. In the center. Here. पीछे लोग कैमरा में ज़्यादा ऊपर हाथ नहीं कर सकते. Can I have that wallet, please? Okay. Sir, आपने इतनी सारी franchise films की हैं, like Welcome हो गई. Then what is this about? मतलब Houseful 5 में ऐसा क्या appeal हुआ और आपको कैसे convince किया कि आप इस film का part करें? देखो, डायरेक्टर कौन है उस पर निर्भर करता है, और दूसरी बात है पैसे. तो मैं दोनों से खुश था, और जो रोल था वो बेहतरीन था. और मैं सच कहता हूँ कि इतने साल, 12 साल तूने क्यों नहीं फिल्म डायरेक्ट की, मेरे समझ में नहीं आता. इसके बाद तो लगातार कर 12 साल, उसके बाद रिटायर्ड हो जा. लेकिन वो देख करते हुए हमको तो कुछ करना नहीं है. इन लोगों ने वो जिस तरह से वो स्लैपस्टिक की है, मुझे तो सीरियसली करना था, और वो जैसे करना था मैंने कर दिया. अब देख लो अब आपको कैसा लगता है. My second question goes to Akshay sir. Sir, the excitement for the film is on a high, but it also comes at the heels of when another film of yours has got into some trouble with Paresh sir's exit in Hera Fairy 3. So I wanted to ask you, like, the fans have been so disappointed and they have said so many things, including calling Paresh foolish for taking this step of leaving this franchise. What do you have to say so as to calm Okay, this?
let me first tell you one thing. What's your name? क्या बोलना है? Akash Bhatnagar. आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि using this kind of word from one of my co-star, like a foolish word or something, I would not appreciate it. I would say that that's not right. He's been with me. I've worked with him since last 30 साल से 32 साल से मैं उनके साथ काम करते आया हूँ. We are very good friends. He's a great actor. I really admire him. And जो भी कुछ है, I don't think so this is a place where I'm going to talk about it, because whatever has to happen, it's a very serious matter. It is a matter which is going to be handled by the court and things like that. So I don't think I'm going to speak about it here. Okay. Thank you. That brings back the audiences. The grandson in stage. With Houseful first. Congratulations. Lastly, Akshay sir, this was such a fun ensemble cast. Any prank that went behind? All the pranks, trust me, was played by Jackie साहब. दादा, prank के बारे में बताओ. बोल रही ये सबसे बड़ा प्रैंक है. आवाज ही नहीं. इतने बड़े बड़े जोकर है भागी. सबसे बड़ा जिसने अभी बोला सफेद सूट में, उसके सामने कौन बोल सकता है कुछ. एक नंबर का बदमाश है. खड़े खड़े शर्ट कब निकाल देता मालूम नहीं पड़ता. किया है तूने बहुत बार. तो प्रैंक ने इन लोग को देखने से मजा लिया. पूरा गेम में खो गया. मनसूख खानी ने संभाला. बाकी का पूरा गैंग तो अपना ये पुराना सब है. कोई नया है, बहुत ज़्यादा ही नया है. मेरे बाजू में आजू बाजू बहुत खूबसूरत है. गोली चाचा मेरे साथ है, मेरा सीनियर, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ. बाकी किसके बारे में बोलो, सब अपने लोग ये बड़ो. आप लोग अपने खाली लेवल अलग अलग लगे ले रहे. सबके ऊपर एक लेवल है. बाकी वही छे सुबह मालूम पड़ता है. ऑल माय लव टू यू. हाँ बाबा, छोटी बच्ची है क्या रे. हाँ बाबा. हाँ माँ मेरे बाप. अच्छा मारेंगे कि सबका बाप. कोई शक ही नहीं है. भिड़ू बहुत मजा आया. मेरा भिड़ू है ही नहीं आज. संजू बाबा आया नहीं, नो प्रॉब्लम. मगर वो मैं अपने सामने ही है. ये शुड टेक इट. उनका शूटिंग कहीं चल रहा है, मगर हम लोग का जोड़ी पिक्चर के अंदर है. और बहुत हम लोग ने एक दूसरे को बहुत पुरानी बातें भी की, नहीं भी की. मजे लिया. तुम लोग भी लो मेरी जान. कुछ ज़्यादा बोलवाना पकावाने बड़े बड़े बोलने वाले, जैसा कि ये बोल बाबा बोल सफेद सूट. और राइटर बाबा, मेरा राइटर एक बस क्या एक बार तो थोड़ा दिखा. It's never complete without Farhad in Houseful. Thank you to our distributor. और ये एक्सपीरियंस हाउसफुल. मतलब बहुत सारी चीजें मिलके हाउसफुल आपके साथ आ रही हैं. कॉमेडी में री एंट्री, तरुण के साथ वापस से काम कर रहे हैं. थर्ड पार्ट के बाद आप आ रहे हैं जी. बताइए सर. जी बहुत ही अच्छा लगा. First of all, to Sajid, congratulations on 75 years. It's truly momentous. I don't know many studios that have made it to 75. And I think reaching 75 is a milestone because it's a testimony of his love that he has towards our industry. Coming to Tarun is family. Tarun and I have known each other since we were 16. And I had the pleasure of being in his first film, Dostana. Working with him is always wonderful. It becomes a holiday for me because you know that Tarun is going to take care of everything. And I'm just so happy that he's back to working. I think he's an amazing talent. And especially in a genre like this, I don't think there's anybody better than him. And I mean this with humility and respect to all the other makers. And I really hope that he continues to work a lot more frequently. Coming back to Houseful, it's, yeah, like you said, it's homecoming. I mean, all of these guys are my friends. And it feels so nice to be able to go on a set which is happy, which is loving, which is collaborative. And it was just a sheer pleasure. I'm very thankful to all of them for their love and for giving me this opportunity. साजिद सर, मेरा सवाल आपसे भी है. इतने बड़े बड़े स्टार्स हो, टेल अस अबाउट दैट. बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा टीम एफर्ट भी लगता है, थोड़ा स्ट्रेस भी होता है, ईगो भी आते हैं, बहुत कुछ होता है. टेल अस अबाउट दैट. I feel 2 जन लाना बहुत मुश्किल है, बट अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर मुश्किल नहीं है.
इतने हो तो then there is no problem. And I think time will change. People are understanding. People want more in this theatre. They want these kind of things to happen. And we've been doing this. I've been lucky. My grandfather started in 1950 and his first film released in 1955, Inspector. And from then we made multi-starrer like lots of films, Yarana, Parvarish, Shaad Ki Safai, Ramkur Ka Lakshman, Bhai Ho To Aisa. All these films which family made, they were all multi-starrers, and I think this time will come back. What Akshay sir is saying, absolutely right, but things are changing now. You can see the impact this film has all over the world, and I think this will be a good precedent for the future. Thank you. Who killed Ranjit? If I knew that, I would let him kill. The whole of my life I've been killing, you know. And in this picture I was thinking that most of the people say Ranjit is the killer. But I was not the killer. Hello, on your right. Hi, this is Diksha from Who pranked you the most? वसूल की अच्छा बेटा सुबह आते आईटी ऐसे दोपहर को नहीं आता और वसूली किसी ने नहीं की सबने अपनी अपनी आई फील एवरीबॉडी टेक्स द प्राइस दे डिजर्व नॉट अ रुपी मोर और नॉट अ रुपी लेस वसूली गोलमाल में है भाई, ये हाउसफुल है. लेकिन तू है, तू घर से एक सवाल लेके आता है. बजट होगा एंड कितने पैसे लिए आपने तकरीबन? क्योंकि यहाँ पर रेड 2 के जो सबसे हाँ पूछो बेटा. तकरीबन कितने पैसे लिए होंगे आपने साजिद जी से हाउसफुल 5 के? अगर मैंने पैसे लिए होंगे तो मैं तुझे क्यों बताऊँ? तू हमारा भतीजा लगता है. मैंने पैसे लिए, बहुत अच्छे खासे लिए. फिल्म बनी बहुत अच्छे खासे बजट में बनी, बहुत मजा आया. आज खुशी का दिन है. तूने अपने रेट डालना था. छोड़ना. चलो आगे नेक्स्ट. हेलो. Alright, we'll take one last question later. क्या करता था अक्षय? आप भी प्रोड्यूसर हैं, साजिद आप हैं, अभिषेक, रितेश, आप लोग भी प्रोड्यूसर्स हैं. कहाँ आपको लगता है कि कहीं हमसे चूक हो रही है किसी मायने में? कुछ कोर्स करेक्शन की जरूरत है? आपसे पूछा अक्षय, आपसे पूछा. We have to evolve and grow every time. And I've been here last 37 years. और हर 5-6 साल में ये feeling आती है कि is going to shut down. So this shutdown gives you a feeling of always working, and this is how we've done 100 years of film industry, and 75 years we've been part of it, and we've been only hearing कि अब ये last 7 साल है, अब creative content खत्म हो गया है, अब. So I think so this helps us to grow more further. जितना we hear this statement कि अब content खत्म हो गया, and सबसे easiest, that's why I realized कि सबसे best है कि हाउसफुल का बोर्ड ही बाहर लगा दो. So that is why हाउसफुल came in. So everywhere जहाँ लगी होगी, आप एक चीज तो पक्का है, हाउसफुल का पोस्टर तो लगाओ. इसमें जरूर स्कोप की तो जरूरत है, इसलिए सर्वाइविंग एवरी डे, चाहे आम जिंदगी हो कोई दूसरा हो, वी हैव टू वर्क एवरी डे, एंड एवरी डे वोंट बी अ विक्ट्री, बट वी हैव टू फाइट एवरी डे. एवरी डे फेस यू ऑल आस्किंग अस कि क्या हो गया आपकी इंडस्ट्री को. वी बीन डूइंग इट लास्ट 75 years, and the next 75 years we'll be doing that. We'll be asking and replying to all of you all कि why we are not doing well, but ये चलती रहेगी और चलती रहेगी.